Hi everyone. So after the yippee, we are back with something else. I just forgot to do the synopsis video. I'm taking up synopsis today and majorly I forgot to tell you the trick for importance or significance of principles of management. So that's what I'm going to do today. We're going to talk about two definitions and I'm going to give you some questions which are very essential from the point of view of board from this chapter. Starting with nothing else but definition of POM. POM are general and broad guidelines to managerial action and decision making. We have done three definitions in the introduction video. Apart from that, now when you talk about the 14 principles of management, we've done the acronym. First is do you care? Do was D for as in discipline, O as in order, U as in unity of what? Unity of direction, C as in centralization and decentralization, A as in authority and responsibility, R as in remuneration, and E as in equity. Okay, this is the do you care 14 principles, 7 principles done out here. Now next 7, yes, personnels, stability of personnel, chain, scalar chain of esprit de corps, initiative as it is, work, division of work, command, unity of command, subordination of individual interest to general interest of organization. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Next 7 principles. So we've just winded off learning the principles of management, one with acronym and the other one with the sentence form. I told you this time in second chapter we are going to use more of sentence form. Next is scientific management. Again we do the definition. It means knowing exactly what you want men to do. Aa gaya same cheez. Seeing that they do it in the best and cheapest way without wasting resources by decreasing cost of production. Principles of scientific management. If you remember, science, not rule of thumb. Harmony, not discord. Cooperation, not individualism. But first, development of each and every person and prosperity of organization is needed. So, यहाँ से development of each and every person and prosperity of organization is the principle. You'll remember it like this only. Very simple. 3 जगह not लगाना है. Science, not rule of thumb. Harmony, not discord. Then cooperation, not individualism, and after that development of each and every person and prosperity of the organization. That's it. So we finished with scientific management principles. Next we switch over to is techniques of scientific management. Again, techniques, I have made a sentence here again. Foreman. What is foreman? Functional foremanship. Study, time study. Next method study. Next motion studies. Demand, पीस वेज कौन सा था? डिफरेंशियल पीस वेज. वर्क हार्ड, गेट फटीग स्टडी. प्लीज हेल्प बाय स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. We have 7 techniques out here, and if you remember, I gave you one star technique. What was the star technique? That was mental revolution. So you can do that separately also. Now, nature of principles of management. Nature of principles of management. Principles of management apply universally, universal applicability. So as these are general guidelines, as it is general guidelines, see, it's easier to remember like this. You don't have to elaborate anything. Formed by practice and experimentation. Are these flexible? Next point. Or contingent? Next point. These are mainly behavioral. Next point. With cause and effect relationship. Cause and effect as it is. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. इस चीज का एक इस चैप्टर का बहुत बढ़िया बात क्या है? 7 and here you have, okay, this is the only one which has 4, otherwise 7, 7, 7, 7. So many points are 7, 7. It will be easier to remember. 14 principles of management, 7 techniques, then 7 points of nature, and then we could talk about 4 principles of scientific management, and now we are coming to what? Importance of principles of management. This I forgot to give you. Okay, principles of management give useful insight
इनटू रियलिटी, ये मैंने पूरा ही लिख दिया आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए क्योंकि ये भूल जाते हैं. सो यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी. फर्स्ट, हेल्प इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये सेकेंड पॉइंट है और ये भी बाय इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसी का सेकेंड पॉइंट है. बेस्ड ऑन साइंटिफिक डिसीजंस, अगर आप बात करें साइंटिफिक डिसीजन की तो हम इसको अलग से ले सकते हैं. मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट, ये आ गया चेंजिंग एनवायरनमेंट. फॉर फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आ गया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. फॉर दिस मैनेजरियल ट्रेनिंग इज नीडेड, मैनेजरियल ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च वाला पॉइंट. सो अगर 1 2 3 4 5 6 क्या आ जाएगा 7. सो अगर हम रियली में लें तो ये भी 7 है. 1 2, ये हमने ले लिया थर्ड पॉइंट, ये हमने ले लिया फोर्थ पॉइंट, ये ले लिया फिफ्थ पॉइंट, ये ले लिया सिक्स पॉइंट. ओके, ये आ गया 7 पॉइंट्स. एक्सेप्ट फॉर द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, सारी चीज़ें क्या है 7 है. अच्छा, एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, जब हमने ये स्टडी की थी ना तो टाइम स्टडी में मैंने आपको यूजफुलनेस दी थी. वो यूजफुलनेस आप ऑब्जेक्टिव की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. तो आपकी बुक में वो ऑब्जेक्टिव की तरह दिया है, लेकिन आप उसको मैंने इसलिए यूजफुलनेस दिया कि कई बार बोर्ड क्वेश्चन पूछ देता है कि यूजफुलनेस क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो ऑब्जेक्टिव भी है और वो यूजफुलनेस भी है. ओके, आई हैव डन विद दिस. आई विल इरेज दिस एंड स्टार्ट विद समथिंग एल्स फॉर यू. समथिंग एल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब क्या है इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द चैप्टर. इंट्रोडक्शन में हमने डेफिनेशन ऑलरेडी कंसिडर कर ली है. सो लर्निंग पार्ट इज ऑलमोस्ट डन. Now I'm going to tell you about the various questions which are important but not specifically given in the book. पहली चीज़ क्या है, हमने करे थे 3 definitions of principles of management. दूसरा क्या है, difference between principles of management and principles of science. तीसरा क्या है, difference between principles of management and techniques. ये हम overview कर रहे हैं. चौथा क्या है, डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड वैल्यूज. पांचवा क्या है, डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. ये मैं पूरा लिख देती हूँ आपके लिए, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. नेक्स्ट क्या है हमारा 6th पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड मोशन स्टडीज. ये आंसर्स आपको खुद खोजने हैं. नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन. नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. ये आपकी किताब में है, ये भी आपकी बुक में, ये भी आपकी बुक में, ये भी बुक में. ये सारे के सारे मैंने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं. एक लास्ट डिफरेंस बिटवीन, ये क्वेश्चन बोर्ड क्वेश्चन है, ये है फंक्शनल फोरमैनशिप. ओके, फंक्शनल फोरमैनशिप एंड यूनिटी ऑफ कमांड. ये कहाँ पर आता है, ये आपके दोनों अलग अलग हैं. एक टेलर की टेक्निक है, एक फ्योल का प्रिंसिपल है. इसमें भी डिफरेंस कई बार आ जाते हैं. और लास्ट चीज़, कभी कभी क्या होता है, आपको डिफरेंस बिटवीन कंटिंजेंट एंड फ्लेक्सिबल. कैन यू बिलीव, कंटिंजेंट एंड फ्लेक्सिबल. और बच्चे इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज होते हैं. So these are few questions which are very very important. So after doing all these 10 questions, there is one more thing which I would like to tell you. And what is that? This is another important question, like I've been telling you all these important questions. One more question is there. The question goes, how are principles of management derived? Now these are derived on the basis of experimentation and observation. अगर आपको याद हो तो हमने एक फीचर किया है जिसमें हमने प्रैक्टिस एंड ऑब्जर्वेशन की बात करी है. आप सारा आंसर वहाँ से पिकअप करके लिख सकते हैं, बट बेसिकली अगर ये क्वेश्चन आ जाता है हाउ आर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिराइव्ड, तो आप इसका आंसर ऐसे देंगे. एक क्वेश्चन और है कि अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो आर दीज एक्चुअली मॉरल इन नेचर, क्या ये मॉरल वैल्यूज़ को एनकरेज करते हैं? तो आपने लिखना है येस, बिकॉज दे टॉक अबाउट दी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो हाउ डू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट contribute towards social responsibility or moral values?
तो इसमें आपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पॉइंट है, अगेन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। उसके अलावा ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पॉइंट, ये देखो यहाँ पर है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंपॉर्टेंस में है। सो वो वाला पॉइंट और मॉरल वैल्यूज आपने जो डिफरेंस किया है मॉरल वैल्यूज और प्रिंसिपल में, वहाँ से मिक्स करके आंसर लिखना है। तो आपने कंक्लूड करना है कि हाँ, हम मॉरल वैल्यूज को लेते हैं इसलिए हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अडियर करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है कि वो कहते हैं कि क्या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो आर्ट हैं कि वो साइंस हैं? ओके, जब आप बात करते हैं साइंस की तो आपको पता है कि जब हम प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं तो वो साइंस होते हैं, लेकिन जब उनको हम क्रिएटिवली अप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? वो बन जाते हैं आर्ट। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दोनों आर्ट एज वेल एज साइंस हैं। I think you've got the synopsis, and study well, do well, and enjoy yourself. Thank you so much, and once again, yippee!